आर्टेटा इन आर्टेटा आउट, मेरे को ये प्लेयर पसंद नहीं है, समझ में हमारे को ये प्लेयर बेचना चाहिए, हमारे को ये रिक्रूट करना चाहिए. ऑल ऑफ दीज रिडिकुलस कमेंट्स आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम स्पेशली आर्सेनल फैंस. इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस बिकॉज अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल स्टेज आ चुका है हमारा. दिस वीक स्पेशली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक ऑफ आवर लाइफ, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम आवर फैंस, which is really embarrassing. All of this can stay on hold and we can discuss this at the end of the season कि कौन किसको बाहर करना चाहिए, किसको रिक्रूट करना चाहिए. But right now we just need to back our manager. We need to back our players to do the job because we have a semi-final to play, potentially a UCL final to play, सिटी टू प्ले ऑन संडे फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल, जो सबसे बड़ा गेम है हमारा पूरे प्रीमियर लीग के कैंपेन का इस सीजन. एंड ऑनेस्टली दैट विल एक्चुअली डिफाइन आवर टाइटल विनिंग होप्स. दिस वीक हैज बीन अ वेरी वेरी बिग वीक फॉर आर्सेनल एंड इट्स गोइंग टू बी सो ऑन संडे एज वेल. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. लेट्स गो. So the first thing is talking about the UCL semifinals. Arsenal have qualified for the semifinals in the UCL for the second time in a row, and I'm very very happy to hear that. Even though we got a very unconvincing win, मतलब हमने 0-0 से बीट किया. एक तरफ बायर्न म्यूनिख है जिन्होंने 4-3 हराया है and 6-4 on aggregate to Real Madrid, which is insane by the way. We only have beaten Sporting and knocked them out from a 1-0 aggregate, which is very unconvincing considering कि हमारी squad उनसे much better है. At the same time, the job is done and a win is a win. So that is what matters for me personally. Yesterday I saw a fairly balanced lineup with Saliba, Gabriel starting in the usual spots. Arteta finally realized that Ben White this season has been washed ever since he has come back from injury. I don't know what has happened to him. And he finally started Mosquera on the right back, who had a banger of a performance. Hincapié को अगर हम देखें तो वो एक अंडरडॉग की तरह काम कर रहे हैं. मतलब वो बहुत सारी चीजें राइट करते हैं एंड फॉर मी ही इज द अंडरडॉग ऑफ द टीम. इट वाज गुड टू सी राइस इन द स्क्वाड बिकॉज ही वाज इल एंड there was sort of a scare because he wasn't in the Arsenal training. But Zubi Mendy की अगर हम बात करें तो he had a brilliant man of the match performance yesterday. It is very good to see this because it will uplift him and lately he has not been performing his best. Eze वापस आ चुके हैं and honestly हमारा best attacking threat Eze ही था because he just tries and just goes for it. At least कोई player तो ऐसा कर रहा है. Now when we talk about the front three, honestly I don't even want to mention this but it was not at all convincing. Martinelli, who has been an underdog in the UCL, was not that great yesterday. Madueke, when you look at him, he had the worst game in an Arsenal shirt. And he was the worst player on the pitch. He could not win any duels. उसकी positioning अच्छी नहीं थी. Honestly, उसकी decision making भी बहुत poor थी. कब किसको पास करना है, कौन खाली है, किस space में बॉल देनी है. Everything was very very bad, and in this case I was badly missing someone like Saka. Surprisingly or non-surprisingly, Gyökeres had a terrible game yesterday. And मतलब ये तो फिर वो शॉट बहुत जल्दी ले रहे थे जो वो उड़ा रहे थे या फिर मतलब वो जा नहीं रही थी, और he was taking the shot so late that he loses the ball eventually. इस मैच में genuinely Saka and Odegaard were a very big miss because Saka has that quality to put the ball into the box, especially in Champions League की रात. And even though Rice was our captain and we have seen Rice captaining this team since the past 2-3 matches, which is very very nice to see. He very much deserves it. We were missing Odegaard for that free flow and that communication in the attack. Timber also was a miss, but Mosquera handled his plays beautifully. मतलब बहुत ही banger performance थी. Won his duels and had a very very good defensive contribution in the team. Now when you talk about these 4 teams that have qualified, surprisingly आप ये guess नहीं कर पाओगे, but ये चारों के चारों जो teams हैं जो बहुत unpredictable है, ये चारों different leagues से हैं. Arsenal being from the Premier League, Bayern Munich being from Bundesliga, League 1 से हैं PSG and Atletico Madrid from La Liga. I could never predict this because I actually thought कि एक all English UCL final होने वाला between Arsenal and someone like Man City, but that did not happen and honestly I did not anticipate this at all. Now we have a matchup in the semi-finals against Atletico Madrid, who we've already beaten 4-0 in the league phase, which is by the way a very convincing win. मतलब almost उनको thrash ही कर दिया हमने. But we have learned this in the past and I'm going to repeat myself here. Never underestimate anyone in the UCL because no matter what happens,
कौन सी टीम किससे बेटर है, यू नेवर नो who's gonna show up. This is the highest regarded European competition and you never know किसने अपनी individual brilliance दिखा दी. On the other side of the draw there is Bayern Munich and PSG, which is going to be a very similar match to something like Inter versus Barcelona जो last season हुआ था. I think this is going to probably be an even better match which happened against Real Madrid yesterday. PSG एक बहुत lethal team है and they have not had a very good start to the season, but right now they are finding their roots and sort of thrash कर चुके हैं Liverpool को 4-0, which is kind of crazy by the way. and field में जाके आप 2-0 beat कर रहे हो, I mean that is insane. When we talk about Bayern Munich, बहुत बार हमने देखा defensively कल Bayern Munich was switching off again and again. Neuer made mistakes, Upamecano made mistakes, but overall they overcame that and sort of attacking quality ही इतनी अच्छी कि उन्होंने वो सारा overshadow कर दिया. And they eliminated someone like Real Madrid from the UCL, who are UCL beasts by the way. So this is what it comes to, and we have a better chance of reaching the final than facing someone like Barcelona. Honestly, Atletico is a much better option for us, and हमारा काफी बड़ा चांस है ऑफ रीचिंग द फाइनल. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द मैन सिटी गेम ऑन संडे, द बिगेस्ट गेम दैट वी हैव. उसका प्रीव्यू मैं एक अलग वीडियो में करूंगा, बट राइट नाउ आई रियली वांट टू discuss what I'm gonna say about the Man City team and what this result can mean for Arsenal and the Premier League. भाई बहुत ही खतरनाक टीम है मैन सिटी, बिकॉज इन्होंने रिसेंटली गेही एंड सेमेन्यो को रिक्रूट किया है. बिफोर जनवरी दे वर नॉट अ ग्रेट टीम ऑनेस्टली, एंड इन्होंने फालतू ड्रॉज लिए हैं, इधर उधर पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, एंड राइट नाउ दे आर लुकिंग द बेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग एंड better than ever. They beat us 2-0 in the cup final, as well as Chelsea को 3-0 thrash किया है away at Stamford Bridge, उन्हीं के home ground पे. So right now I think they are in a very dangerous and lethal position, which we should be scared by. ये जो भी संडे को मैच आ रहा है, this will define our season. If we go on to beat Manchester City at the Etihad, this will not only be a statement win, but this can actually make us feel more confident. And honestly, with the depth that Man City have and the attacking quality that they have, it's going to be a crazy result for us. Whereas if Man City beat us, which is going to be very unfortunate, they already have a game in hand. So अगर वो game in hand भी Burnley के against जीत जाते हैं, तो they will be equal in points against us, which is a very big thing. We have tougher games incoming in the Premier League as compared to Man City. Games like Newcastle, जहाँ पे ये लोग make sure करेंगे कि हम points drop कर दें with their shithousery. Players like Joelinton, Bruno G, they know how to disrupt the game, and there's a real chance we might drop points there. And if City do not lose after that, they will win the title, and which is going to be horrible to watch as an Arsenal fan yet again. Now coming to how we have been playing, a lot of fans in social media have been saying कि we have been playing dirty football and boring खेल रहे हैं, and we have not been performing well deserved नहीं है, which is something that I've been hearing. It's a shocker. Well deserved कैसे नहीं है ये मुझे समझ नहीं आई, but at the same time, this has gone a bit out of proportion for me, if I'm being honest. It's not like we've been bad all season. It's just the last 4-5 games हम अपने roots भूल चुके हैं, and something has changed within the club. Before that, we were actually very consistent. But one thing is very clear, defensively we are very good and our attacking quality is not there at all. अगर हम कल का मैच देखें तो भाई attacking quality इतनी खराब थी, मैडुएके की, ग्योकेरेस की, मार्टिनेली की. Eze, who has been our average player all season, was our best player overall attacking wise throughout this entire season, which basically tells you कि हमारे में attacking depth तो है, लेकिन attacking quality बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी जो बेस्ट attacking teams हैं, let's say top 5, PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Man City, क्या इन टीम्स में कोई भी अगर हमारा अटैकिंग ऑप्शन है, क्या एक भी प्लेयर इन टीम्स में खेलेगा? एंड द आंसर टू दैट सरप्राइजिंगली इज नो. मे बी साका कम्स क्लोज, बट साका हैज ऑल्सो नॉट हैड अ गुड सीजन एट ऑल दिस. मतलब he has to improve his game. Maybe Eze can be there, but again, Eze also has not been the best and he has been bang average. He has been missing a lot of games. Nonetheless, we're going to talk about the recruitment in the summer and what can Arteta actually change attacking wise in the upcoming matches. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. At the end of the day, one question remains कि क्या Arteta
हमारे को ओवर द लाइन ले जा सकते हैं, एंड कैन ही लीड अस टू ग्लोरी? इट्स बिन 6 years एंड ही हैज स्टिल नॉट डिलीवर्ड अ मेजर ट्रॉफी. दिस इज हिज बिगेस्ट टेस्ट राइट नाउ, बिकॉज ये एक सीजन डिफाइनिंग हफ्ता है, ये एक सीजन डिफाइनिंग महीना है. कैन ही फाइनली डू द जॉब, और विल वी सी येट अगेन अनदर वे वी विल फॉल शॉर्ट, एंड दिस टाइम इट विल बी इवन मोर पेनफुल बिकॉज हम छू के सिर्फ हट गए. ऑलमोस्ट एक जनरेशनल बैंटर हो सकता है इस चीज में, एंड इट्स गोइंग टू बी मिजरेबल. मुझे लग रहा है मुझे सोशल मीडिया डिलीट कर देना पड़ेगा अगर ये ऐसा कुछ हो गया. इट विल बी वेरी मच अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम एन आर्सेनल फैन. एट द एंड आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट टू ऑल आर्सेनल फैंस, एंड दिस कम्स फ्रॉम माई हार्ट. बैक योर प्लेयर्स, बैक योर मैनेजर, बैक योर क्लब, बिकॉज तुम्हारे को नहीं पता इन पे क्या प्रेशर है, इन पे क्या नर्व्स हैं. जो तुम बोलते हो वो पिच पे ट्रांसेंड होता है, रिफ्लेक्ट होता है, परफॉर्मेंसेज आते हैं इनसे, एंड यू स्प्रेड सो मच ऑफ नेगेटिविटी फॉर दिस प्लेयर्स एंड फॉर दिस मैनेजर कि ऑलरेडी इतना प्रेशर जो उन पे बिल्डअप हो रहा है उसमें और ज्यादा ये बैंटर सुन के उन पे प्रेशर बिल्डअप होता रहता है. इफ वी एड आवरसेल्व्स इन द राइवल्स का बैंटर तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दिस टीम फील्स लाइक अ स्टोरी जिसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं आ रही, बट आई एम श्योर एंड आई हैव दैट बिलीव. अंदर जो मेरे एक फैन है वो आवाज दे रहा है, दैट इज सॉर्ट ऑफ स्पार्किंग दिस बिलीफ कि कुछ ना कुछ ये कर सकती है सीजन. Nonetheless, let me know down in the comments below your prediction number 1 for the UCL semi-finals and final. कौन जीतेगा UCL? And also for the Sunday, Man City versus Arsenal, कौन जीत सकता है? Will Man City actually beat Arsenal and go ahead to win all the games and win the title eventually, or will Arsenal do a statement win here and beat Man City? या फिर ये एक बहुत ही बोरिंग ड्रॉ होने वाला है जो काफी राइवल फैंस इसके बारे में मीम्स बनाने लगेंगे. लेट मी नो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.